Hey, so welcome to season 2 of Pointless Stories with Kaish and FS. We're back after a hiatus of 1 week because the two of us were sick and our voices were out, which is critical to the podcast. But we're still sick. We're still doing this, and it's nice to be back for season 2. Not much has changed. It's been a month and it's been actually just a month since we've started, and we're on season 2. But we're back. We haven't got any new ideas. We have no plans for anything. All we knew is that 22 episodes is a lot for a season, and we're TV guys, we're TV heads, so we'll probably do 10 for the next few seasons. And at some point of time, I think we'll have like a point to a season, but we're not there yet. So, Karish, welcome to season 2. Welcome back, खुशामदीद आप सबका नाजरीन. बड़े शुक्रगुजार हैं हम कि दोबारा ये मौका मिला है हमें, that we're recovering, that our voices are coming back, and over here the weather's getting much better. It's like it's unseasonably warm. It was 13 degrees yesterday in February. Nice. So all in all, man, things are looking up. It's been it's a good start to the year already. Like, can you believe it's already February? No, man. Like, to be honest, I can't believe what year it is. To be honest, like, I was thinking like 10 years ago was 2014, and I remember 2014, and who I was and what I was and the dreams and aspirations I had. And I can't believe that it's February of 2024 now. Can't. I know, man. I was talking to someone just yesterday about, how, I told him he looks very young. Like, I thought he was a student and he'd, just finished, uni. Yeah. And he told me when he finished uni, right? He said 2013. And it made me, I started to think about, wait, when did I finish uni? And it was, in 2016. Yeah. And that was almost 8 years ago. Oof, when you think about it, and it's so weird because I still I still dress like a college student. I still look like a college student. Yeah. I get mistaken for a student all the time. And I still feel I'm like a student at heart. Yeah. Just my habits and just, kind of my outlook towards life as well. Yeah. But it feels weird to think that, man, that was over 8 years ago, I haven't been a student in ages. It's crazy, man, because since we're young, we've always been students, and it's only 2016 when we stopped being one. So, वैसे मुझे आजकल भी लगता है कि I'm still learning, which is weird कि when I was in university, what I wanted to do was stop learning forever. और आजकल यार हम वक्त गुजरने के लिए कुछ सीख रहे हैं. So it's pretty weird. वाकई यार बहुत कमाल की बात की आपने ऐसे कि we're now it's we need something to fill our hours when we're when we have downtime. We try to learn things that will help us grow, even if it's just in our, we're not going to use it to make money, or we're not going to use it toward, it's not going to help us in any monetary way in life. Yeah. But, skills or things we can learn that will just improve our how can I say this? Just emotional well-being, True. Can I ask you this? In terms of our university education, and school and university, and what we've learned outside that, how much do you think each is important? For example, who I am as a person in daily life has very little to do with what I learned in university, even though I work in the same sector. But what's your take on that? I would agree. It's the same for me.
in my like day to day at my job, like I don't use any of the things that I learned in uni. At least like none of the like knowledge I acquired in uni. I don't use any of that in my job. But a lot of like the soft skills that you acquire along the way, like for me, you know, we gave so many presentations over the course of that time, and most of those were conducted in a very like formal way, you know, where you were supposed to adhere to like very strict requirements to like pass the class and like get a good grade. So they were very much conducted the way like business presentations are. And also just like designing, like as part of uni, you would have like assignments where you had to make like, you know, something, create some type of thing, you know, for a project, or where it had to be like it had to meet very specific requirements, and you had like a deadline, and it was like very rigorous, you know. I think those kinds of things definitely prepare you for the job, because you'll end up using a lot of those same tools like Excel. You know, we learned a lot of Excel in uni, for example. Even just learning how to use like Word, you know, to create something that's like presentable. All of those like soft skills that you acquire, I think they definitely like prepare you for the real world. But apart from that, man, like the knowledge you acquire, even if it doesn't benefit you like in your like, even if it doesn't help you in your day to day, it can definitely further your knowledge of the world and like be of like immense like personal value, you know. I agree, because I work in a technical field, and I did have a technical education, and like before I went off to university, like I've got, you know, family members. Like I said, I'm like the 33rd electrical engineer from my family. So I've got, you know, No way. my dad, my cousins, they're all the same. And all of them, like some of them are like really accomplished, some of them aren't. Like some of them went to the leading universities, you know. So all of them told me, listen, mate, whatever you learn in university is completely useless, right? Like you don't use any of that in real life. So when I did go off to university, I had that mindset. And the other problem is by the time we graduated high school, I was burnt out, you know what I mean? I had nothing left in me. I wanted to सिर्फ अयाशी करना था यूनिवर्सिटी में. So बिल्कुल यार, और आप तक की भी बात थी वैसे. हाँ जी, सिर्फ वो की. मेरी 4 साल की हिसाब में सिर्फ अयाशी है भाई, और कुछ की नहीं. मतलब जो यार बताता हूँ कि जो हमारे 8 बजे के क्लास था, वो पहुंचना ही मतलब मिशन इम्पॉसिबल था भाई. तो और हम तो यार काफ़ी डीवा वाला बंदा है कि मेरे बाल तो लंबे थे, मेरे उस ज़माने में बॉडी थे, और हमारे मतलब काफ़ी नोटिसेबल है कि बाकी सारे जो हर हाई स्कूल की टॉपर होते हैं ना, वो था मेरे क्लास में कि सब नर्ड्स है. ऐसे है कि यार वहाँ जाकर मतलब पहले फ़र्क मुझे ये लगा कि हाई स्कूल में तो या स्कूल में तो हमारे टॉपर्स होते हैं, और यू नो आधी आवाम होता है, लाइक नॉर्मल पीपल यूज्ड टू बी देयर. तो उसके बाद वहाँ जाकर यार हर बंदा नर्ड है, और बंदिया तो बंदा ही है. तो उसके बाद यार मतलब सवाल ये है कि नर्ड के अलावा अब क्या है, कि आपकी कौन सी इंटरेस्ट है. एंड यू गेट काइंड ऑफ you know like typecast quite early. So मुझे देखने से लगता था कि बंदा तो जिम जाता है, तो I was known for that. तो मैं क्लास जाता था, तो मतलब बन सवर के जाना ज़रूर है हमें यहाँ, कि बंदिया कोई नहीं है, देखने के कोई नहीं है, फिर भी हम अपने स्टैंडर्ड्स तो रखते हैं भाई. तो 8 बजे की क्लास में यार अगर 10 मिनट बाकी है निकलने के वक्त पर, फिर भी वक्त पर नहीं पहुंचते, कि 5 मिनट दूर ही है. मतलब हॉस्टल तो वहाँ है भाई, 5 मिनट ही लगता है, मगर
रास्ते में यार बंदे मिलते हैं और मतलब हमारे हम आई नो वी कीप सेइंग वी आर इंट्रोवर्ट्स, मगर हम यार बात करने में अलग ही मतलब स्किल्स है हमारे कि कोई भी बंदा मिले कुछ ना कुछ तो हम उससे बात कर सकते हैं कि सोचो कुछ यार नहीं है, बिल्कुल। हाँ यार कुछ कॉमन में नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। जैसे यार जो वाकई में। हाँ जी, जो बंदे मुल्क में बड़े हुए उसकी मतलब उसकी कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट ही नहीं है, उससे भी हम बात करते हैं भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एहसास ही है, हम इंसान नहीं कुछ भी, हमारे सब इंटरेस्ट होते हैं। तो एंड आई थिंक वी काइंड ऑफ वांट टू लर्न फ्रॉम other people and what they have to say. तो मैं यार आई रीच लाइक 15 minutes लेट, और हमारे यूनिवर्सिटी की जो लेक्चर हॉल्स थे 2 एंट्रेंसेस थे, एक पीछे और एक आगे। तो पीछे से मैं मतलब आ सकता था कि मेरे तो लास्ट बेंच की बाद 3 बेंच होते हैं, वहाँ बैठते हैं हम 3 नालायक थे जो हमेशा साथ बैठते थे, दोनों मेरे सीनियर्स थे। तो वहाँ ही बैठना था, मगर मैं सामने से आता अंदर कि यार बंदा तो बन से कर आए तो सबको दिखाना तो है। तो ऐसे आते हैं कि जो मतलब सलमान तेरी नाम में आता है कि सलाम आपकी क्या चल रहा है टीचर को, और टीचर यार हमें देखकर यार तू कब आए मतलब, और थोड़ी और लेट आता तो मैं यहाँ नहीं होता भाई। तो मैंने कहा "हाँ, ठीक है आया ये तो शुक्र अदा करो"। तो शुक्र अदा जी तो ओह कमाल। ये हमारी पर्सनालिटी थी यार। और मतलब इसकी मतलब मसला ये है कि इतना नोटिसेबल होने से हम काफ़ी दुश्मन तो बनते हैं, और सारे फैकल्टी हमारे ख़िलाफ़ थे कि बंदे को मतलब एक एग्जांपल बनना ज़रूर है, मिसाल बनना ज़रूर है कि ये बंदे को हम ज़रूर अच्छे नंबर नहीं देंगे। मगर यार उसके अलावा भी काफ़ी अयाशी तो चलता था कि मैं सुबह अगर क्लास जाता था तो सिर्फ सोशलाइज करने जाता था, मेरे पास कुछ नहीं था भाई कि मैंने जैसे कहा बन से कर आता है हाथ में मतलब कलम नहीं मतलब कागज़ नहीं कुछ नहीं भाई, सिर्फ हाथ में शायद फ़ोन होता है कि मुझे कोई नोट्स नहीं लेना, मेरे पास लैपटॉप कुछ नहीं है नोट्स। वैसे यार अजीब कहानी है कि तो पेन हम बोरो करते कोई ना कोई से कि वैसे ही बैठा हो तो पेन तो हम बोरो करते, और जो डेस्क है ना पुराने जो वुड की होता है, वहाँ यार मैं शायरी लिखता था और मैं अपना इनिशियल्स FS डालता था सही। तो जी वहाँ कोई बैठता नहीं है, मगर जब इवेंट्स होते हैं तो डेस्क यहाँ वहाँ होता है। तो उसके बाद काफ़ी लड़कियाँ आकर मुझसे पूछा कि यार ये आपने लिखा काफ़ी खूबसूरत है, किस बंदी के बारे में। तो मैं हमेशा उनसे कहता है कि यार ये मेरी ख्वाब की बंदी है, मैं आज तक मिला नहीं, मगर मतलब एक बंदी है जो मेरे क्लास में था, मैं ज़्यादा उसको राब्ता तो वो रखता हूँ। मेरे एक निकनेम उसने रखा था कि बीफ केक, तो मेरे काफ़ी निकनेम्स था। हाँ यार मेरे काफ़ी निकनेम्स था। तो ये बंदी आजकल भी काफ़ी मतलब उसकी यार शादी हो रहे थे हाँ, तो उसने यार मेरी ज़िंदगी पूरे फजूल है, तो उसने मुझे याद की और मैसेज की कि यार मेरी शादी हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा कौन है बंदा, तो उसने पूछा क्यों, तो मैंने उसे सिर्फ मजाक में कहा अगर मैं अप्रूव नहीं करते तो शादी नहीं कर सकते। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं भेजता हूँ फ़ोटो। तो यार फ़ोटो मैंने देखी तो बंदी उतना भी खूबसूरत तो होंगे नहीं, मगर फिर भी काफ़ी तो बेहतर वो था सही। तो उसने फ़ोटो भेजा और फ़ोटो में यार एक बंदा है कि बिल्कुल नालायक है। तो हाँ यार मगर मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, मतलब उसने कहा कि मेरे पुरानी दोस्त है, हमारे काफ़ी स्कूल में साथ था। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं तो अप्रूव करता हूँ, आप शादी कर लो। तो उसके बाद मुझे पता है कि बंदी क्यों आई। बंदी मुझे आकर कहा कि यार जब हम वो फर्स्ट ईयर में था ना आई हैड अ क्रश ऑन यू। और मैंने कहा हाँ पता है भाई। तो शी इज़ लाइक यार आपको कैसे पता। मैंने लाइक हाँ मैं पहली बार नहीं देख रहा ये सब। तो शी इज़ लाइक तो आपने कुछ की नहीं, मतलब कुछ किया क्यों नहीं। तो मैंने कहा हाँ यार मेरे अलग माइंडसेट था उस ज़माने में। तो उसने पूछा क्या पढ़ाने था ना, मैंने कहा नहीं पढ़ने के लिए नहीं। तो मैं सिर्फ मतलब फुल एंजॉय करना था कि यार जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ की बंदिया से ज़्यादा मैं नहाता था।
तो मुझे वहाँ से कोई लेना देना नहीं, वहाँ मेरी हिस्ट्री नहीं है भाई कि मुझे वहाँ की 3,000 लोग मुझे पता है और उससे उसकी डबल उसे हमें पता है। सही पूछ लो किसी से भी, बंदा का कभी एक लव इंटरेस्ट था, बताएंगे नहीं यार ये तो बंदा मुकम्मल मतलब सख्त सिंगल था। सही तो मैं सिर्फ आयाशी करने के लिए गया था यार। मगर मेरे पॉइंट, हाँ प्रेजेंटेशंस में भाई ये जो नर्ड्स होते थे उसकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होते, तो हमारे हमेशा ग्रुप प्रेजेंटेशंस होते थे। तो मैं वो बंदा था कि मतलब पिछले रात तक मैं सिर्फ व्हाट्सएप में भी इसकी मैसेजेस नहीं देखता। पिछले रात में आता हूँ और पूछता हूँ कि यार कहाँ पहुँचे, तो उसने कहा यार पूरा मतलब सेट है मगर प्रेजेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मैं कहता था ठीक है मैं प्रेजेंट करूँगा। तो उसने वो पूछता कि यार आपको अगर कुछ पता है, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता मगर यार विंक करता है, कोई मसला नहीं। तो वो तो आप कर लोगे यार आराम से। हाँ यार, तो ये हमेशा मतलब मेरे जो सब ए ग्रेड आए ना, बंदे ने काम किया यार। मेरे जो इंडिविजुअल ग्रेड्स है वो सब डी सी ऐसे ही नलायक ग्रेड्स है, मगर ग्रुप्स में हमेशा ऐसे होते हैं कि बंदा यार मुझे पिक करता है और मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्यों पिक कर रहा है। यार तू तो बड़ी अच्छे प्रेजेंट करता हो। तो मैंने अच्छा ठीक है। तो जीपीए वैसे ख़राब थे मगर यार बेसिकली हम अयाशी करने गए थे। नहीं यार ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, पर मैं ये बात बताऊँ ना कि अगर आप अपनी कोई दिलचस्पी की चीज पढ़ें कि जो आपके कोई ऐसा मौजू जो बिल्कुल आपको ना जिसमें आपकी बहुत दिलचस्पी है, जिसमें आप यार अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हो, जैसा कि आप तारीख ले लो या सियासत ले लो, जिन चीजों में आपको वाकई आप ना उसका अपने मतलब जब फारिग भी होते हो आप पढ़ते हो उसके बारे में। यही चीजें अगर if you learn them in university, like if you take like a course on like say language or poetry, philosophy, any of these things, यार वो वैसे वाकई बहुत कमाल के होते हैं उसमें आपको मतलब आपको पता है कि ये चीज आप कभी इसका इस्तेमाल नहीं करोगे जिंदगी में अपने in your like work life or in your professional life, पर वो चीजें सीख के आपको बहुत यार it gives you a sense of fulfillment and this like sense that like wow I've really furthered my understanding of the world in a big way. हाँ यार, और हमारे वहाँ मतलब टेक्निकल एजुकेशन थे मगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं, कि ऑक्सिलरी कोर्सेज भी थे, कि इकॉन थे और लैंग्वेज थे। इन सब में भाई मैं तो टॉपर हूँ, मगर जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स है उसमें मेरे नंबर ही नहीं आए कि मैंने पढ़ा ही नहीं। और भाई मुझे काफ़ी नखरे था कि ये जो बंदा पढ़ा रहा है वो तो फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर है और मैं तो थर्ड जनरेशन इंजीनियर है भाई, कि तेरे बाप तो गवार था मेरा नहीं, तो तू मुझे पढ़ाएगा, ऐसे नखरे था मेरा। तो मैं पढ़ा ही नहीं भाई, मतलब बिल्कुल रिग्रेट भी नहीं करता हूँ कि मैंने कुछ सीखा नहीं वहाँ से, मगर रिग्रेट भी नहीं करता भाई। नहीं यार आपकी ये कहानियां तो मुझे याद है जो नवदीप के साथ you were like up at 2 a.m. and you guys were doing coke at the private party. There was a private DJ and everything. And I was like, man, this is just so crazy because I remember him from when हम लोग 7th पे थे, वो 8th में हुआ था, because I remember he was in the same like the same grade as my girlfriend at the time, right? तो मुझे यार काफी बंदे पता थे उस ग्रेड के यार कि किस टाइप के बंदे थे वो यार बाद में पता है कईयों उनमें कोई ऐसे भी थे जिनके साथ बहुत बाद में जाके मेरी अच्छी दोस्ती भी हुई थी। अच्छा। जैसे आपको पता नहीं मैंने शायद ये वाकया बताया है कि नहीं शायद बताया हो, क्योंकि it's one of those really like the world is really small kind of stories. Right. But एक वाकया हुआ था ना कि मैं I'd moved to Australia, so it was like 2017, right? Yeah. And I'd been there for like a whole semester, so I think it was like 2018. Yeah.
आपको याद आया ये वाला? हाँ यार याद आया. कौन सा था बता? Melky. Oh bro, Yeah. yeah, यादाश्त Yeah. come on, hey, your memory is too जी. strong. ऐसे नाम कौन रखता है भाई कि इसकी मिडिल नेम तो मिल्टन था. यार पता है मैंने इस पे ना I just googled it because I was interested. I'm like ये नाम पता नहीं है, मैंने पहली दफा सुना है. हाँ. तो इसकी तारीख भी बड़ी वैसे दिलचस्प है. You know the Arabic word maliki? हाँ. Yeah. Is that yeah, and then in Hebrew it's Malik, Melech. Yeah, Melech. Yeah. And then before Hebrew, I guess it was like Latin. It was like, Melchi. Yeah. Nice. But it's not even Melchi. It's really like Melchi in Hebrew. But it's really the same root word, It's like Malik. उर्दू में भी कहते हैं मालिक जैसे कहते हैं. एक उर्दू वाला मालिक मुझे पता है, वो शायद सुन रहे. बताओ. कि जैसे कहते हैं ना कि ये यहाँ का मालिक है, you know what I mean? मेरे दिल की मालिक. It's like so it just means like king. Like originally, like Melech was like the king, and then Arabic even they said like Meleki, like the king of everything, or like the owner of everything. तो वहाँ से नाम आया Melki इसका, and I guess क्योंकि मलयालम बाइबल में it changes to Melki, क्योंकि काफी नाम बदल जाते हैं, आपको याद होगा मलयालम बाइबल में, which is like an interesting story, man. Like I don't think many people outside Kerala know about the Malayalam Bible, Yeah, true. I'm surprised you know about it, but what I assumed is it was like Malachi, because I've met like Mormons with that name. तो मैंने सोचा शायद वो है, but it's interesting because even like when you talk about Arabic, like Saudi Arabia, we know it was King Fahd, but when I meet people who grew up in Saudi Arabia, they always say Tarif Sharia Malik Fahd. And, like King Fahd Street is Malik Fahd Street for them. So it's understandable, but like I didn't realize that's where it's from. Yeah, man. Even in Hebrew, it's something people say a lot. Like you'll see like sometimes Israelis, they'll say Ya Melech. Like when they're talking to someone, like they'll call him like the king. Like you're the king kind of thing. This happens to me. And like a lot of people, especially people who are higher up than me, like to call me Malik Fahd because of the Nakhre. Oh man, that's dope, dude. Yeah. That's fucking sick. Yeah, I'm not proud of it. But यार, but नहीं आपने सही बात की है. और पता है एक दफा it's interesting you mentioned Saudi because मेरा Saudi से एक दोस्त हुआ करता था, he I met him in Australia. He was like there. He was like studying there. Yeah, I remember this. Yeah, I would, and eventually his brother moved there as well. So, हम लोग काफी chill करते थे. We would like get together. ये भी दबा के फूंकते थे. They would like smoke. Oh, dude, just to go back on the conversation. Like, on the 2 a.m. concert, it was my friend doing coke, not me. Abke bhabhi ke liye, yeah? Just God. Oh, bro, यार मैं तो भूल ही गया कि यार अगर आप चाहो तो यार ये अभी को ना दिखाएं तो वो भी नहीं यार हम कोई शर्मिंदगी हम करते नहीं, मतलब ठीक है अगर मैं की भी मैं तो एक्सेप्ट करते हैं, मगर हमारे यार हम हमेशा ऑन है भाई, ऑफ करना मुश्किल है हमें, तो को क्यों करूं? सही बात है यार, ये बात तो है यार, आपको तो जरूरत ही कहाँ है, ये तो आपके जहन में वैसे ही है. हाँ यार ये ऑफ करने के तरीके हम ढूंढ रहे हैं. बताओ. सॉरी कट यू ऑफ. पर नहीं यार क्या बात हो रही थी मैं भूल गया. सऊदी आबिद. हाँ तो आबिद ने ना एक दफा हमारा काफी चिलिंग का सीन होता था, हम साथ बैठ के ना बातें करते थे, चिल मारते थे. तो एक दफा यार मैंने उसको बताया, हाँ मेरा एक अच्छा दोस्त है फहद नाम है. तो जैसे ही मैंने फहद कहा ना, उसने कहा अच्छा इज ही अरब, क्योंकि हाँ ब्रो आपका नाम ही ऐसा है, it's like very like Khadija, because I think he asked me if you're Qatari actually, like because
Okay, huh, bro. It's very Khadija, you know? It is. Like, it's not even a name you see outside in the other Arab countries. It is 100% Khaliji. And it's 100%. most of us Faheds are named after King Fahd. So you'll see a lot of them born, around the same time. Ki 1990s ki bande hamesha. So that's amazing, man. Yeah, buddy, but Dude, that's a dope name to have, man. Just saying, man. That's so it's pretty badass to have that. Yeah. Because yeah, man, like a lot of people like don't like their name. They feel like it's kind of basic, or Muhammad. It's like, yeah, man, that you would definitely feel like a number if you had a name that was very common like that, Yeah. Even like John, imagine your name was John. It's like, or Keith, Dude, Keith is so rare that like you already know something's wrong with this guy. It's only, I swear, it's Keith so Urban. like Southern American. Yeah. It's not even like a name you'll find in America. Like, it's very common. It's only in the southern United States. I'm always where thinking you'll find Keats. Yeah, I'm always thinking Keith Urban, man. And Toby Keith. Oh, Toby Keith, yeah. As well. Both of whom are country singers, which is like a perfect example of like, it's just the most like southern redneck name. And bro, Toby Keith died. Did you hear he passed away recently? No, I did not hear that. Man, he's pretty young. I think so, man. And like, I don't know what happened, but then again, like rednecks, they don't always live like the best lifestyle. Yeah. So I don't know what happened exactly, but yeah, dude, it was I saw it on the news a few days ago, and I was thinking how like we when we were in like 2006, I don't know how everything circles back to the year 2006, but in 2006, man, his song Whiskey for My Men, Beer for My Horses. Dude, can't believe you remember that. That was, dude, that was so big back then, right? In that era. Country music was something we were actually exposed to, which is weird. Like, आजकल सुनते नहीं, मगर उस ज़माने में इतना कम म्यूजिक था कि country भी सुनना पड़ता था. Oh, bro, मजबूरी थी और कुछ था थी उस वक्त, You're so right though, because even my friends, would find it strange that I have a friend from North Carolina, right? But he's not he's not a hick or a redneck. Yeah. Like, he's very like, his family's actually not even from there. They're from like Virginia and Maryland. Yeah. And they moved down to North Carolina for work, like, and then just settled there. Yeah. So he's not even like Southern, but he's like grown up in the South. Like, that's where he grew up. Yeah. And, even he was shocked that I knew all of these like fucking old country songs. Yeah. And, he was like, man, how the fuck, living in the Middle East, like, how are you even exposed to this stuff, And I'm like, all credit to GTA San Andreas. The country radio station, like, they really gave me the exposure I needed. Yeah, it was pretty good. It was so good, dude. It was so good, man. I still listen to some of the songs from the game. I remember, because when we met, you had the Spotify list on for that. Oh, did I really? Yeah. We listened to it in your hotel room. Because you're like, hey, listen to this, buddy, and it's a Spotify playlist of GTA radio. Oh, that's right, man. Buddy. We played it at you're right, at the hotel. Man, I forgot, that slipped my mind, but man, that was a good time, dude. Like, it's a year ago, man. I was thinking of how that was last Ramadan, and it's almost Ramzan again. And man, I just want to tell you this कि यार उस ज़माने में मैं काफ़ी मतलब बुरा वक्त से गुज़र रहा था, मेरी mental health भी काफ़ी ख़राब था, and the fact that you were around for a month was so helpful, man, and I want to thank you for it. वैसे आजकल भी काफ़ी बुरा है, मगर like I don't know what I would have done if you weren't around for that month, man. No way, man. I see. That's the thing. I would not have been able to tell even, like you hold it together really well. हाँ यार, मेरे अंदर से काफी टूटा है. नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, but वाकई I had no idea, like
But no, man. Likewise, I was not in the best place myself. Yeah. And things were looking pretty uncertain at the time. Like I wasn't really sure where I was going, and I didn't really have a plan or anything. I was kind of just in limbo. And as much as I tried to live in the moment, like a lot of those things were weighing on me. Like what am I doing? Where am I going? Yeah. Aage ka kya plan hai? And shit. But man, the fact that you were there and like always available to hang out too. It was honestly a dope, man. Like, despite being so busy, man, I was like, how are you just able to make time to chill and stuff? And it like really means a lot, man. No, likewise, man. I mean, you've always been there for me, so it's only right that I do the same. It's not very hard to make time, 24 घंटे यार काफी ज़्यादा लगता है मुझे हमेशा कम नहीं. Say baat hai. I feel you, man. There's always time for if you want to make time for someone, Absolutely. But on that note, to go back to where we wanted to go with this, where do you reckon we will be in the next few years or next 5 years, or where do you think our life's going? नहीं यार, ये बात तो इस पे करना लाजमी है, क्योंकि यार मैं इसके बारे में काफी वक्त से सोच रहा हूँ कि where exactly are we taking this, and what are the things I want to do in the next few years, because it is unfortunate, but 30 is like such a checkpoint in life. It's easy for you to say because आप अभी तक मतलब 29 है कि मेरा तो हो गया भाई, मुझे मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है. मतलब when we started this podcast was the day that I turned 30, और उसके बाद यार मतलब जैसे पहले फजूल था अब भी फजूल है. नहीं, ये बात तो है, बात आप सही है यार. मतलब it's more of like a psychological thing. Yeah. But it is something that gets you thinking, and it is something where you feel like, oh man, कि अब तो मतलब वाकई we're like full like old, Yeah. You know what I mean? Yeah. तो यार लेकिन मैं भी पता है कि अभी तक I'm 29, but in a few months, in just a few couple months, I'm gonna be there, तो ये आपको मतलब these are things that force you to think about like what your plan is for the next few years. Like, what do you really want out of life, before like life starts to weigh on you. Like I see people in like in their like, by the time like the next decade is going to be big, because by the time when you turn 40, man, it's like that's when like that life's going to start catching up with you in many ways, Yeah. So you want to like really have a plan for the next 5 years at least, if not for the next 10 years. Yeah. Like all of the things that you've like wanted to experience in life, like why not get the ball rolling on those things, I started to think about the stuff when I remember, since I like to travel a lot, right? Yeah. And like to meet new people and like experience different cultures, things like that. And I remember, man, for a while when borders were closed, like everything was shut down. Yeah. Like Australia closed its border even to like its own citizens, Yeah. And travel was almost like it came to a standstill for like 2 years. And it was like, it was just, it was like, it really started to get me, I started to think about, well, am I going to have the chance to like travel again, like with how things are, and like, is the world ever going to be the same? And it made me feel like, what, man, life is short, and like, if you like to travel, why not do it when you're young, Yeah. Like I really want to experience that like in the next 5 years, like really live in different places and like spend a little bit of time in different places. I know I'll have to spend the bulk of that in Canada still for like residency. Yep, and then tax purposes as well. Yeah.
but I'd like to have a job that like a work from home or like a remote job or like something that I can do on the go. Yeah. Like I remember Kevin kind of put this thought in my head as well. I mean, I've been thinking about it for a while, but he kind of like really started to, tell me more about it, and like it got me thinking as well. Like this idea of like Wi-Fi money, where you're making money just from your like laptop and your internet connection, and there are many people who do that. Like even people in traditional jobs, like IT professionals. Yeah. I've met a ton of IT folks who work from home. Like their job is 100% remote. Like they don't go to the office at all. Like even meetings are virtual. They don't go to the office even one day a week. Yeah. And that's a job where, man, today, like I could. Like this weekend, I could travel to like a different city, be chilling there and like hanging out there, and still be able to do my job, clock out at like 4 or 5, and then like go explore that city, Yeah. And I don't know, man. Those are the kinds of career options I want to explore, and I know it's been done, and like lots of people are doing it now with how many opportunities there are, and just digitally. Yeah. But I don't know, man. I want to like explore some options there and see if I can like have a career like that, because my big thing for the next few years is, man, I want to like see the world, It's interesting, man, but like I'll give you my answer on this, but here's the thing, man, because like I had a plan. Like when I look back, I want to like remember the plans I had. तो मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मेरे एक ही प्लान था कि मुझे I want to get married किसी भी कीमत में. I want to get married by 23, right? And I wanted to have, because my parents were married young, and I've seen how that's helpful. So that's what I wanted. और मैं यार उसके पीछे इतना पड़ा था कि that's when Aisha happened, right? और मैं यार मतलब मेरे पूरे ख्वाहिशात एक तरफे और मेरे हकीकत एक तरफे हो गई. और उसकी बाद यार जब टूटता है ना वो सपना, कि वो ख्वाब जब टूटता है, काफ़ी मुश्किल होता है कि एक्सेप्ट करना कि मेरे सारे प्लान सब बर्बाद हो गई और मुझे दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. वाकई यार ये तो बहुत बहुत मुश्किल होता है. और it's like starting from scratch when you're already like kind of at a point where you thought you'd be settled, हाँ जी. तो आज अगर मैं 30 की उम्र पर पहुंचा हूँ तो यार मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जो भी हुआ ना, जो भी अच्छे बातें हुए, वो सब अनप्लान थे, और जो भी मेरे प्लान्स थे वो मुझे बर्बाद कर दी. कि like I'll tell you, like मुझे हमेशा ये शौक था कि I wanted to be successful professionally, मगर उसके लिए कोई प्लान नहीं था. कि मुझे मतलब प्रोसेस पर मैं बिलीव करता हूँ कि वैसे शेरा से मैं बात कर रहा था, तो वो आजकल मतलब वो 4 साल छोटी है, तो वर्कफोर्स में अभी एडजस्ट हो रहा. तो मैंने उससे कहा कि यार कुछ अलग नहीं करो, जो भी सब करता है वो ही करो. कि 9 to 5 तो है, मगर हर दिन थोड़ी थोड़ी बेहतर हो जाना. कि that's Japanese philosophy called Kaizen, which is continual improvement. You don't need to take big steps. You don't put like the goal in mind. सिर्फ हर दिन थोड़े और बेहतर हो जाओ, and in the end you'll see like you're making a lot of progress, right? तो मेरे वैसे हुआ. That's honestly very true, man. हाँ जी. तो मेरे वैसे हुआ कि इतना वक्त तो है बंदे के पास कि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, कि हर दिन मतलब 5 मिनट या 10 मिनट कुछ नया कर लो जो आप कल नहीं कर सकते थे. तो आज अगर कल से बेहतर है तो परसों इससे भी बेहतर होंगे. तो मतलब ऐसे मैंने जो तरक्की की यार वो प्रोसेस से की. और जो मेरे प्लान्स था कि मेरे एक there was an end in sight,
वो सब मतलब अब भी अधूरा है कि I'm still not married. I wanted to have kids when I was younger. I don't have kids, not that I know of. And जो भी और ख्वाहिशात थे वो सब मतलब अधूरे रह गए। और काफ़ी था कि मेरे एक वक्त पर गाड़ियों की शौक़ था, वो खुदा की शुक्र है वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से गुज़रा। और जो भी और शौक़ थे कलेक्टर बनने का कि वॉचेस इन सब की शौक़, वो भी यार मैंने काफ़ी मतलब मैं खुश हूँ कि कितना की मैंने। और मुझे ये समझने आता कि मेरे अपने आप के लिए काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं। I'm kind of harsh on myself। मगर जब किसी और से जैसे शेरा से बात करता हूँ, शी लाइक्स टू रिमाइंड मी कि मेरे उम्र के हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ किया है, तो तभी मैं मानता हूँ कि मेरी कंपटीशन में सिर्फ अपने आप को रखते हैं। जब मैं दूसरे बंदों जो हमारी उम्र की है उसको देखते हैं तो समझ आते हैं कि काफ़ी कुछ किया है। But if you talk about the future in the next 5 years, yeah, what I'd like to do is I'd like to be in a place where, like you said, I'd like to be free to do what I want. कि मुझे ऐसे भी नहीं है कि I want to be बिल्कुल फारिग, कि आप जानते हैं कि हमारे जहन कैसे काम करते हैं। तो I want to be able to be in a place where अगर मैं if I want to go skiing, I want to be able to go skiing, you know, like the process is in place। मेरे अलावा भी काम कुछ होता है, मगर मैं आता हूँ कभी कभी, जैसे ये बंदा मतलब 10 साल पहले क्लास जाता था कि एंट्रेंस करने के लिए, और कभी कभी मतलब जब ज़रूरत है कि यार ये हमसे नहीं होगा, ऐसे सीन है, तो बंदा आ जाता है, वरना तो बंदे खुद ना खुद मतलब कारोबार में या काम में इन सब चीज़ों में मसरूफ़ तो रहता हो, कुछ ना कुछ तो होता है। मगर हर एक दिन वही चीज़ नहीं कि आई ऑलवेज से मेरी जो भी टीम है मैं उससे कहता हूँ कि यार अगर आपसे होते तो कर लो, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी फिर मुझे बुलाना। उसके अलावा मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं विकीपीडिया सर्फ कर रहा हूँ, मतलब काम पर हूँ और फिर भी काम नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं। अगर आप कर सकते तो बेहतर है आप कर लो। कि मेरे करने से मेरे तो पर्सनल रेट ये है कि $2000 लगते हैं आवर के, तो अगर आप 50 में कर सकते हैं तो आप कर लो, ये बेहतर है। मैं ये करने से मेरे क्या तरक्की होना है। तो सही मेरे सिर्फ इतना प्लान है यार कि मेरे जो ख्वाहिशात है वो मैं मुकम्मल कर सकूं, कि जो अपनी मर्ज़ी, जैसे मैंने कहा गैंडल्फ कभी कभी काम पे आता है, बंदा हमेशा सिर्फ जब ज़रूरत पड़ता है वहाँ दिखता है, मतलब बंदा आ गया तो ज़रूरत आ गई, ऐसा है। तो ऐसे तो मैं काम और कारोबार में होना चाहता हूँ, और उसके अलावा जो पर्सनल लाइफ है, मुझे छोटे छोटे ख्वाहिशात है यार कि यार मैं उसमें काफ़ी मतलब डरता हूँ कि वो स्टेट करने में भी, कि मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि यार ये सो ब्लेस्ड, आपके पास सब है, सही है, मगर एक चीज़ ना कमी पड़ी, और वो चीज़ की छोटी भी ख्वाहिशात रखने या कहने के लिए मैं डरता हूँ कि मेरी पूरे मतलब कमी मुझे अपने आप में उसमें ही नज़र आता है। और ख्वाहिशात है कि किसी दिन 5 साल में पता नहीं कि, मगर किसी दिन आपके भाभी के साथ हो, हमारे एक छोटी सी ख़ानदान हो, हम आपस में खुश हो। मगर खुदा करे, मैं यार डरता हूँ कि वो भी कहने कि पता नहीं, खुदा भी हमसे काफ़ी नाराज़ है, दे नहीं रहे, मगर इंशाल्लाह खुदा करे। इंशाल्लाह ब्रो, आपके लिए दुआ तो करेंगे, हमेशा से करते आ रहे हैं, पर बिल्कुल करेंगे यार, क्योंकि अगर आपको ये सवाल पे कि आप अगले 5 साल में क्या करना चाहते हो, ये सवाल जब आपके जहन में आता है तो आपके जहन में खुद ब खुद अगर भाभी का नाम आए जी, तो इसका मतलब है यार कि ये तो इस पे अमल होना चाहिए, यू नो। और उम्मीद है कि यार सब सेट हो जाए आपका, क्योंकि फैमिली यार, मैं you know, it's like a nice life to have like you know, a family that your world kind of revolves around, you know. हाँ जी। It seems to be like a natural part of like growing up too, from what I can see around me. Yeah. And हाँ यार, उम्मीद तो है कि सब you know सही से सेट हो जाएगा। हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि जो भी बाकी चीज़ें मैंने कभी, यार शेरा मुझसे आज कह रहा था कि यार आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ चाहा, और सही है,
मैंने आज आज तक अगर नमाज पढ़ी, दुआ की, तहज्जुद पढ़ी, तो सिर्फ भाभी के लिए पढ़ी यार। बाकी सब जो मुझे मिला ना, मैं वाकई में खुदा से मांगा भी नहीं, मैं मुझे सिर्फ मिलता जा रहा था, और बड़ी शुक्र अदा करता हूँ। मगर यार मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि ये ख्वाहिशात भी ना, कि नहीं मांगूँ तो बेहतर है। कि पता नहीं यार, बंदा तो काफ़ी टूट रहा है मांग कर। मुझे पता नहीं कि मुझ में ऐसे भी क्या कमी है कि ये एक चीज़ अधूरी रहेगी। मगर पता नहीं, जब सेल्फ डाउट सेट्स इन, इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट शिट। वाकई यार सही बात किया आपने। पर यार उम्मीद तो है। आई मीन if it makes you feel better यार, हम भी किसी को काफी चाहते हैं, पर अभी फिलहाल कोई सीन नहीं बना है, जी, आपके लिए भी मैं दुआ कर रहा हूँ, और आप मेरी यार सपोर्ट है कि ऐसे नहीं कि मतलब मुझे ठीक है, मैं जब अपने आप को देखता हूँ मुझे कमी नज़र आता है, मगर जो आपकी हिसाब से है तो मुझे साफ नज़र आता है कि बंदा का कमी नहीं है, कि किस्मत की कमी है, वो कुछ नहीं कर सकता यार। तो चलो। यार मतलब बड़ी यार खूबसूरत बात की आपने, क्योंकि यार मुझे तो बिल्कुल यही बात आपके बारे में लगती है कि यार मेरा अपने बारे में तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। पर आपका यार कभी समझ नहीं आता कि हाउ कैन ऐसा कैसे हो सकता है यार पर हाँ जी। पर एक बंदी है यार जिसके I really like her a lot man, पर पता नहीं हम शुरू से आपको पता है I've been really bad at like reading, खासकर जब आप किसी को कुछ बहुत लंबे वक्त से नहीं जानते हो, कुछ महीने से ही जानते हो, so it can be hard to read like signals and body language etc. तो पता नहीं मुझे यार कि how she feels. कई दफा ऐसा लगता है कि it is mutual, but then I start to think maybe that's wishful thinking, maybe that's just because I want it to be mutual. तो लेकिन यार कई दफा ऐसा लगा है मुझे कि like किसी से आप जब बात करो तो आपको थोड़ा तो अंदाजा हो जाता है if they like spending time with you, or they like talking to you, and if they how do they feel about you really. खुदा करे कि वो हो जाए, मगर मेरे भी भाभी होना ज़रूर है। मगर यार मैं आपसे एक बात कहूँ कि असलियत में हमारे मुश्किलात क्या है कि हम दोनों यार, हमारे गेम काफ़ी अच्छे है, सही, और हम यार जब when we don't care काफ़ी आसान है हमारे लिए कि बंदी गिरना तो ज़रूर है। कि आपको पता है कि हमने 6 दिन में बंदी को ऐसे मतलब पलटा कि वो ज़िंदगी भर मतलब चलना तो भूल गया, सही। तो गेम यार हमारे है, मगर जब ऐसे होते हैं ना, जो हमारे जो बाबिया है उसकी यार हम असली मोहब्बत करते हैं उससे, तो हम वहाँ गेम नहीं लगवा सकते, कि दिल नहीं करते उनसे ऐसे खेलना। कि आपके भाभी के साथ भाई मैं मतलब if I was pragmatic, I would not care, like I would treat her not that well, कि वैसे बंदी तो गिर जाती भाई, you can't treat her like a queen, मगर there's no way they fall for that, कि वो होते नहीं। मगर जब असलियत में ज़िंदगी में शहज़ादी आता है ना, तो हमें लगता है कि ये हक हमें अदा करनी है उसके, कि I want to be a good man to her, I want to be nice to her, I want to say nice things, I want to be always there for her, I don't want to ignore her, I don't want to treat her like shit। मगर जब वो करते हैं भाई कि बंदा हार जाते हैं यार। हाँ, मुश्किल काफी नाजुक सूरत हाल है पर यार उम्मीद तो है because आप दोनों की बहुत कमाल की जोड़ी होगी। You would get to go to Ahmedabad, it should be the dream। जी। और आप यार बर्मिंगहम भी जा सकते हो, वो भी आपने देखना है। तो ये तमाम जो आपके दूसरे भी जो ख्वाब हैं आपके, सबसे बड़ा ख्वाब तो
जाहिर है कि आपका यही है पर उससे उसके अलावा जो आपके और ख्वाब आपके हैं कि एक दफ़ा जिंदगी में मैंने अब्टाबाद देखना है एक दफ़ा ब्रैडफोर्ड बर्मिंघम जाना है you know पेरिस तो है ही है पेरिस भी देखना है तो ये सारे शौक भी आपने ये सारे ख्वाब भी आप पूरे कर सकते हो और वो ख्वाब और ज़्यादा मेरा ख्याल है क्या कहते हैं they'll be more memorable if they're with that special person, you know? जी वाकई मगर यार मैं काम एक बात बताऊँ आपको कि ये प्लान बनाने हमने काफ़ी ज़िंदगी में बनाई और अधूरी रह गई मैं उसमें मतलब ज़्यादा यकीन नहीं करता कि हो जाएंगे मगर बैकअप प्लान तो मैं बताता हूँ भाई कि अगर हो नहीं ना कि अगर हमने मतलब सारी ज़िंदगी सिंगल गुजरी तो एक मीम था जो मैं आजकल देखा था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक छोटी सी नेबरहुड खुद की बनाई 2 घर है और सब उनकी है कि मतलब एक छोटी सी सब मुकम्मल उसका है कि दोनों बंदे 30 साल की उनकी यारियां है और सिर्फ वो रहते हैं वहाँ तो अगर हमारे ये बात अधूरी रह गई तो हम यार वो करते यार ये तो लाजमी है मैं तो बिल्कुल यार इसका सीन यस करूंगा you know if it comes down to it क्योंकि हमने इसके बारे में कई दफा सोचा है कि अगर ऐसा हुआ ना कि आगे जाके हम लोग क्या करेंगे तो मुझे याद है आपने एक बताया था यार कि हमारा एक ख्वाब हुआ करता था where सारे जो बॉयज हैं ना in this case it's just you and me all the lads that you know we the single lads they live in a cul-de-sac हाँ भाई तो cul-de-sac में सबका अपना अपना घर है पर एक ना we just live in like a little cul-de-sac with all our homes there जैसा उसका था यार CJ and San Andreas you know हाँ वाकई वैसा लेकिन थोड़ा अच्छा इलाका है not the streets मतलब high end एग्जैक्टली मतलब एक अच्छा cul-de-sac मैंने शायद आपको एक तस्वीर भी भेजी थी मतलब यार मेरे पास है फेवरेट है मेरे फोन में ना कह रहे यार क्योंकि मुझे I'm like really happy to hear that क्योंकि जब मैंने खींची थी मुझे लगा bro it's like it really doesn't capture the place as like you know it doesn't do justice to the place हाँ ये मैं समझ सकता हूँ पर फिर भी यार आपको अच्छी लगी ये सुन के अच्छा लगा ब्रो क्योंकि वो देखते ही मुझे लगा this would be the perfect place और वहाँ कोने में जो एक घर था ना जो on the left side of the cul-de-sac they had like 2 black Cadillacs outside the house nice and I was like यार यही तो चाहिए you know this is like the perfect setting but यार वहाँ you know I was going to say like it was a nice city but I like being in like a bigger place you know where I'm like closer to like a major urban center you know but यार वो सपना तो है यार it's like it would be dope to live in a place like that I was going to say man once I didn't realize this at the time cul-de-sac is like French. Yeah. So like cul is like it means bottom. Mm-hmm. And then sac is like a bag, right? Like so cul-de-sac is like bottom of the bag. Yeah. Or bottom of the sack, like a plastic bag. Mm-hmm. And it's shaped that's like kind that. of why. Yeah, it's shaped like the bottom, right? Yeah. But it sounds so funny now because they use cul like. It's pronounced like cul in French, like C-U-L. Yeah. But they use that to talk about like your ass as well, like that bottom. Mm-hmm. So when I hear the word now, it sounds so funny, man, because it's like that's how you say ass in French too. Oh man, that kind of takes a little bit away from the value that we attach to it. बंदे सब चीज बर्बाद करते हैं भाई एक अच्छे मतलब याद भी नहीं रखते बंदे माफी क्योंकि वाकई in the English world, the English-speaking world, they romanticize French to the point where even ass sounds like
sounds fancy, you know. Easy. Okay. But they really do, man. Like anywhere in the English-speaking world, like French just kind of has this like prestige, you know. Mm-hmm. Yeah. They see it as like very like sophisticated and classy, and which is true until you meet somebody from Canada. or even France, man. There's like some of them are really unclassy, you know. Like so many Parisians are like very crass and like very like vulgar, you know. No, but yeah, man, if you listen to like a lot of French rap, for example, you're like, man, this is not like the image that Americans have in their head. Yeah. And that's why French people hate like Emily in Paris. Yeah. Because they're like, man, this is such and a... I hate it as well. Yeah, man, no doubt. It's just such a stereotypical view of the city, and such an Americanized understanding of France. But yeah, man, it definitely is stereotyped as like romantic and classy and, you know, prestigious. But even like now, man, it's like, you know Jodie Foster, right? Yeah, it's a name I've not heard in a long while, but yeah. You know, she's fluent in French. Like, she speaks perfect French. I did not know that. Yeah, man. I mean, it gets back to that prestige thing, but she comes from like a really like wealthy family, you know, like aristocracy type wealthy. Nice. Like her family was up there with like the Kennedys in terms of like status. Right. So like her parents sent her to like a francophone school, like a French school in Chicago though. Mm-hmm. So it was like fully French, like it was like as if you went to school in France. Right. Like they had the French curriculum, the French board, and all of their subjects were completely in French. Mm-hmm. So if you ever listen to her in her interviews, right, and on French TV, she sounds like a woman from Paris. No, I believe you. But even like with some names, you can tell that they're rich. You know, Jodie Foster is a name like that. But it's been a journey, man. It's almost we're almost at the hour mark of the first episode of season 2, and I think I think the impetus we had was like the 5-year plan, but I think the most impactful thing that we've talked about is the cul-de-sac. Because like यार हमारे बचपन की मतलब ख्वाहिश है मतलब आज भी है मगर मुकम्मल नहीं हुआ. But from when we were young, we wanted to live on the same, you know, at the end of the bag, basically, at the end of the sack. Exactly, man. Dude, that was honestly our dream. And I think back then, especially when, you know, maybe kids who grow up in Doha now, it's different for them because... even if they don't have cars, like, you know, they're in high school, let's say, they can, they're still able to, like, take public transport and go meet each other. And, you know, it's like, we never really had that growing up, you know? Like, when we were kids, man, we didn't really see each other much outside of school, you know? True. Like, it was only on, say, like, people's birthdays or, like, you know, like, gatherings and stuff. Yeah. And I think a big reason was, man, we were so dependent on our parents to take us places that we couldn't just like, you know, make like drop in and like hang out with people unless they lived in like the same neighborhood as us, you know. Yeah, true. So for me, man, it was always the dream, dude, to have a setting like that where it's like we used to love shows like How I Met Your Mother. Yeah. Because everyone lived in like a 500-meter radius of each other, you know? True. Anytime you wanted to hang out with one of the buddies, you just gave them a call and they met at the local bar, you know? Yeah. Man, but we're almost there, so what do you want to call this one? The cul-de-sac? Yeah,
Yeah, let's call it That's Dope, the cul-de-sac. Alright, so ladies and gentlemen, this has been episode 1 of season 2 of Pointless Stories with Karshan FS, the cul-de-sac. We'll see you in the next one.